Hello, myself Divya Porwal, volunteer of Applied Forensic Research Science. This video contains forensic science important sections in Indian Penal Code. Series 4. Content of this video. It contains section 40 of IPC, section 41 and 42 of IPC, section 52 and 52A of IPC, and conclusion. First is section 40 is offense or apradh. In this, except in the chapters and sections mentioned in clause 2 and clause 3 for this section, जो भी sections या chapters mention है clause 2 या clause 3 के अंदर, the word offense denotes a thing made punishable by this code. जो word offense इन chapters या sections के अंदर लिखा है उसको उस offense word को कोड के द्वारा punishable किया जा सकता है. In chapter 4 and chapter 5a and in the following sections, namely sections which are present here, means section from 64 to 445, the word offense denotes a thing punishable under this code or under any special or local law as hereafter defined. And in section 141 to 441, which are right in this row in third paragraph, the word offense has the same meaning when the thing punishable under the special or local law. स्पेशल और लोकल लॉ के अंदर जो भी ऑफेंस का मतलब होता है वही इन सेक्शंस के अंदर भी होगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड पैराग्राफ जो ऑफेंस का मतलब है वो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के अंदर अलग होगा. And one more line mentioned in the third paragraph is such law with imprisonment for a term of 6 months or upward, means the punishment which is given under these sections is a term of 6 months or upward, whether with or without fine. Fine is included or otherwise not. The term special law and local law are defined in section 41 and 42. So, special law means a special law is a law applicable to a particular subject, means the special law is applicable only on the particular subject. And local law, a local law is a law applicable only on a particular part of India, means local law is applicable on the particular part of India, not all over the India or a particular subject, only on particular part of India. Next, section 52 is good faith. Nothing is said to be done or believed in good faith, which is done or believed without due care or attention. In most of the cases in forensic science are come that any person who believed to another person in a good faith and he robbery on his house, theft or murder or rape, this type of cases are common good faith. Good faith is a disadvantage in this type of cases. Next is section 52A is harbor. Except in section 157 and in section 130, in the case in which the harbor is given by a wife to her husband of the person harbored. The word harbor includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means of conveyance, or the assisting a person by any means whether of the same kind as those immuted in this section or not to evade apprehensions. In section 52A, the word harbor is explained. The meaning of that word harbor is explained. That what is the meaning? It includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means of convenience. मीन्स इनमें से कोई भी चीज़ एक पर्सन को प्रोवाइड की जाती है, वो पर्सन विक्टिम भी हो सकता है जो, और ये जो चीज़ें हैं अगर ये चीज़ें उस पर्सन को पुलिस की कस्टडी से या पुलिस से दूर भागने में मदद करती है, अरेस्ट होने से दूर भागने में मदद करती है, उसे हार्बर कहा जाएगा. लेकिन अगर यही चीज़ें कोई पर्सन किसी और को प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मली देने के लिए प्रोवाइड कर रहा है, नेचुरली बांटने के लिए प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे हम हार्बर के अंदर नहीं लेंगे. और इन सेक्शन 157 एंड इन 130 द रिटर्न इज़
157 और 130 के अंदर ये लिखा है कि हस्बैंड अपने वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को इनमें से कोई भी चीज़ प्रोवाइड करती है तो उसे हम हार्बर शब्द के अंदर नहीं कहेंगे, उन्हें हम इस चीज़ के अंदर नहीं मानेंगे कि वो उसे अरेस्ट होने से भगा रहा है या अरेस्ट होने से दूर भेज रहा है। लेकिन ये चीज़ दूसरे पर्सनों के लिए गिनी जाएगी कि अगर कोई भी पर्सन ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, कोई व्हीकल प्रोवाइड करता है या फूड ड्रिंक मनी प्रोवाइड करता है कि तुम लोग इस सिटी से उस सिटी में चले जाओ या दूर चले जाओ, तो वो चीज़ हार्बर वर्ड के अंदर गिनी जाएगी। हार्बर वर्ड का मतलब ये होता है। The conclusion is, let's recall the things. First we see in section 40 the meaning of word offense. What is the meaning of word offense? And in section 41 and 42 we see the special law and local law. Special law is applicable on a particular subject, or local law is applicable on a particular part of India. And in last we see 52 and 52A section. In this section, it is explained the meaning of good faith and harbor. And thank you for watching the video. If you like the video, just put the like, and if you have any queries, put in the comment section, and if you want to watch our more interesting videos, then subscribe the channel. Thank you.